Hello friends, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. We have discussed about the adjective and types of adjective in its part 1, and now it's the part 2 in which we will be discussing about the sequence of the adjectives, how we can put different adjectives in a particular and in a correct sequence. So now the general sequence of the adjective for things. Now, so there are 9 things in which you have to consider a particular and the correct sequence. In order to learn for an easy, you have to remember one mnemonic, a word through which you can learn the particular sequence of 9 things, in which now we will discuss all these. The word is ऑप्शेकॉम. ऑप्शेकॉम उर्दू में आप इस तरह से लिख सकते हैं ऑप्शेकॉम, इन विच द स्पेलिंग इज OPSHACOM. ऑप्शेकॉम. ठीक है. अब ये एक वर्ड है, इसको नेमोनिक के तौर पर आपने एडजेक्टिव की सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक वर्ड को हमेशा याद रखना है, लाइक द वे वी हैड रिमेंबर्ड the conjunctions, the coordinating conjunctions with the word fanboys. इसी तरह एडजेक्टिव की सीक्वेंस याद करने के लिए इस वर्ड को आपने रिमेंबर करना है हमेशा फॉर थिंग्स, नॉट फॉर द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग्स. देन विल डिस्कस लेटर ऑन. बट इन नाइन चीजों की सीक्वेंस के लिए आपने ये वर्ड याद रखना है. अच्छा देखें, OP मतलब द जनरल ओपिनियन. OP is denoted for the word general opinion. S, first of all we have taken this as the individual, and it gives a size. Then comes SH, then we have taken SH both. First of all we have taken only S just for the size, then we have taken the same S and the next H for shape. And then comes A stands for age. Then C stands for the color, and in color there comes 2 things, one is the pattern and the other is the design. Then comes O stands for the origin, and then M stands for the material. So these are 9 things. So these are 9 things including these 2. You have to remember this particular sequence. Otherwise, if you not put, or if you not remember this particular sequence for these 9 things, the incorrect sequence of the word will be considered as incorrect writing or incorrect sentences. So now you can put these origins or these obshecom word in a formula. Like for example, first of all comes the general opinion, then size, shape, age, color. In color there comes the design and pattern, and then at last comes the material. देखें, अब हम एक एक को देखेंगे कि भाई ओपिनियन का मतलब क्या है, साइज क्या है, शेप का क्या मतलब है, एज, कलर एंड मटेरियल. देखिए, जनरल ओपिनियन का मतलब है कि भाई ओपिनियन अबाउट समथिंग, चाहे गुड और बैड. देखें, जनरली एक सेंटेंस मौजूद है, एक सेंटेंस आमतौर पर बड़ा मशहूर है, कहते हैं कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. देखिए, आप जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में उस चीज का एक खाका बन जाता है. ठीक है, आप मुझे देखते हैं तो मेरी शेप का आपके जहन में एक खाका, एक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, तो जो आपका ओपिनियन मेरे बारे में बिल्ड हुआ है, तो इस वक्त तो इसे कहेंगे कि भाई द जनरल opinion to be made about something. It can be either good or bad, it can be of any quality. Then comes the size stands for the degree of largeness and smallness. ठीक है, जब साइज हमेशा ओपिनियन के बाद आएगा, पहले आपने उसका ओपिनियन बनाना है अपने माइंड में, फिर उसके बाद आपने साइज लेकर आना है कि भाई इट इज द डिग्री ऑफ लार्जनेस और स्मॉलनेस. फॉर एग्जांपल, बिग, लार्ज, लिटिल, मैनी, टू मच. ठीक है. देन कम्स शेप इज द आउटलाइन ऑफ एन एरिया. ठीक है, like for example, of anything, of any shape, of a kind. For example, it's a round, it's the square, it's the rectangle, it's a hexagonal, it's a pentagonal. Any kind of a shape that comes in your mind, that will come under this shape. ठीक है. अब ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि भाई ओपिनियन पहले आएगा, उसके बाद आपने साइज लगाना है, उसके बाद आपने शेप का जिक्र करना है. देन कम्स योर एज स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ अ टाइम. ठीक है, अब लेंथ ऑफ अ टाइम से क्या मुराद, मतलब यंग, ओल्ड, न्यू, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड. ठीक है. देन कम्स द कलर.
any kind of a color, either is green, yellow, red, white, ठीक है. Then comes the design. अच्छा, design is the drawing, ठीक है. मतलब आपने कोई चीज देखी, उसके ऊपर कोई ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है. हर चीज का कोई ड्राइंग होता है, कोई पैटर्न होता है, कोई उसका, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी, यू सी द फीमेल ड्रेस, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, बाज़ औक़ात हैंड से हुई होती है और बाज़ औक़ात मशीन की होती है. एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर्ड, प्लेन. देन कम्स द ओरिजिन, ठीक है. अच्छा, ओरिजिन में आपने बहुत सारी चीजें, जब भी आप कोई चीज लेते हैं तो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, मेड इन यूरोप, ठीक है. तो मेड इन का मतलब है उसका ओरिजिन बताता है. और अबाउट एनीथिंग, अगर आप बताते हो कि भाई ये कहां से बिलोंग करता है, अदर इट इज पाकिस्तानी ब्रांड, इंडियन ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड, कोरियन ब्रांड, जापानीज ब्रांड, ठीक है. तो दैट विल कम अंडर द डोमेन ऑफ ओरिजिन. देन एट लास्ट कम्स द मटीरियल, ठीक है. भाई उसमें कौन सा मटीरियल यूज किया गया है, मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेड अप ऑफ आयरन, मेड अप ऑफ स्टील, मेड अप ऑफ गोल्ड, मेड अप ऑफ सिल्वर, मेड अप ऑफ डायमंड. ओके, we have the example in which I have considered all these qualities. Like he brought her, उसने उसके लिए लेकर आया. एंड देखिए, अगर अच्छा नंबर, इसमें एक चीज है जो कि यहाँ पर मिस है, लेकिन जब भी कोई नंबर आता है तो नंबर आपने सबसे पहले लेकर आना है अपने सेंटेंस में. लाइक ही ब्रॉट 2, ही ब्रॉट 3, ही ब्रॉट 4, ही ब्रॉट 1. जब एक चीज हो उसके पास तो उसका मतलब तो नंबर को आपने इन 9 से भी पहले रखना है, ठीक है. ही ब्रॉट हर एन एक्सपेंसिव स्मॉल राउंड न्यू गोल्डन प्लेन स्विस गोल्ड वॉच, ठीक है. तो अगर इन 9 चीजों का आपने जिक्र करना हो, अब अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपने हर सेंटेंस में इन 9 चीजों की हर एक की आपने जिक्र करना है. समटाइम्स आप इनमें से 2 का करें, समटाइम्स इनमें से 1 का करें, ठीक है. लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस ठीक रहेगा, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस वी हैव सीन दैट ही ब्रॉट हर एन, देखिए सबसे पहले जो नंबर आएगा. देन कम्स एक्सपेंसिव. व्हाट इज एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव इज द ओपिनियन. इट्स अ चीप, ये महंगा है, ये सस्ता है, ठीक है. तो इज चीप और एक्सपेंसिव इज द ओपिनियन. स्मॉल कम्स योर साइज, स्मॉल और बिग. देन कम्स राउंड, शेप आपको बता रहा है. देन कम्स एज, मतलब न्यू है. देन कम्स गोल्डन, मतलब उसका इट टेल्स अबाउट द कलर. देन कम्स प्लेन, इट्स अ डिजाइन. देन स्विस, स्विट्जरलैंड, ठीक है. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्विट्जरलैंड इज स्विस. It's a European country. Then Swiss. Then comes gold, which tells about the material, ठीक है. ये गोल्ड का है, ये आयरन का है, ये स्टील का है. लास्ट में आप नाउन लगा देते हैं वॉच, ठीक है. सो ही ब्रॉट एन एक्सपेंसिव स्मॉल राउंड न्यू गोल्डन प्लेन स्विस गोल्ड वॉच, ठीक है. देखें, अगर आप सेंटेंस फॉर एग्जांपल आप इसमें जो थोड़े से क्वालिटीज ले लेते हैं, जरूरी है कि आपने हर सेंटेंस में ये तमाम लिखनी है. आप 1-2 भी लिख सकते हैं. लाइक दिस इज अ न्यू रेड गोल्ड वॉच, आप इस तरह भी लिख सकते हैं. देखिए न्यू क्या हो गया, इसका एज बता दिया. कलर, देन गोल्ड. देखें कलर, देन रेड, इट्स अ न्यू, इज द एज, देन कलर, देन गोल्ड इज द मटीरियल. देखिए अगर इस सीक्वेंस के साथ इस सेंटेंस को मैच करें तो बिल्कुल पहले जो है ना, अच्छा न्यू आता है, उसके बाद रेड है, उसके बाद गोल्ड है, ठीक है, क्या मटेरियल है. अगर इस सेंटेंस को आप ऐसा लिखेंगे कि दिस इज अ रेड, नंबर हमेशा फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है. दिस इज अ रेड न्यू गोल्ड वॉच. तो अभी आपने इस सीक्वेंस को बिगाड़ दिया, तो इसलिए ये सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग एंड दिस विल बी द करेक्ट वन. So dear students, then comes the sequence of the adjective for the persons. So there are 11 qualities that you have to make the particular sequence in your sentences. First of all comes age. An age might be old, young, or the middle aged. Then comes build. It can be thin, fat, or smart. Then comes the height. A person can be tall, short, medium height. The hair color comes black, gray, white. The hairstyle, hair color, then the hairstyle. Okay, it might be wavy, straight, curly, long. Then face,
heart shape, thin long nose or straight nose. Then comes the eyes. Eyes can be black, can be brown, and sometimes can be blue. The complexion in the pink, tan, pale or white red. Then comes the distinguishing features. ठीक है, अब ये हर शख्स की अपनी फीचर्स होती हैं. लाइक वी हैव रिटन अबाउट द शेवन, द वन हु शेव, a clean shave, the one who don't have any beard, like ladies, women or girls, or the boys, those who have not yet grown up their beard. Then comes the beard, moustache, unshaven. Then comes your dress. The dress can be fashionable, can be conservative, can be well dressed. And then comes the personality. ठीक है, कि बंदे क्या, either he or she is a moody, calm, cheerful, polite, or whatsoever it is. So it will come at the end of the sequence. Like for example, I have written a sentence in which I have put all these qualities in a sequence wise. Like he is thin, tall, and has black curly hair, thin lips, a straight face, brown eyes, and he is a tame, a clean shaven, well dressed, cheerful person. देखें, ये एक मैंने साख लिखा है, द वन दैट बिलोंग्स टू द अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, उस जो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग होते हैं उनका मैंने एक साख यहाँ पर क्या लिखा है, उनकी क्वालिटीज जैसे वो लोग होते हैं. ठीक है, उनकी फेशियल जो क्वालिटीज है, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनके मैंने क्वालिटीज इस सेंटेंस में पुट की हैं. ही इज अ थिन, वो एक पतला लंबा, उसके ब्लैक करली हेयर्स है. Most of the time you might have noticed the African, they have curly hairs, yeah, thick lips, their lips are thick, a straight face, brown eyes, and he is a tame, a clean shaven, well dressed, cheerful person. ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आपने ध्यान में रखकर कोई भी सेंटेंस आपने बनानी है. ठीक है, लाइक द अदर वन इज शी इज अ फेट एंड शॉर्ट वुमन. ठीक है, अब शी इज अ फेट एंड शॉर्ट वुमन, वो मोटी और छोटी औरत है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने ये तमाम क्वालिटीज को लिखनी है, आप इनमें से कोई दो भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई इसके जो सीक्वेंस है वो आपने नहीं बिगाड़ना. So thank you so much for watching this video. In our next part we will be discussing about the degrees of the adjective.